Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your friend Karim Khan with another grammar lecture video. I hope you will be fine. You will be doing great. Dear friends, आज के क्लास में हम बात करेंगे what is a sentence and what are the functions of a sentence. बहुत ही basic class है. In previous classes हमने जाना what is letter and letter आगे उसको combine करके उससे word बनते हैं and word डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड हमने पढ़े, मॉर्फीम हमने पढ़ा. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस. सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आपको मिले. थैंक यू वेरी मच. नाउ लेट गेट स्टार्टेड. क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिफाइन सेंटेंस. What is a sentence? Sentence is the start of English grammar. English grammar की जो इब्तिदा है वो sentence से होती है. So, a group of words which expresses a complete thought. A group of words. A sentence must be at least 2 words or 3 words. It should be a group of words. A group of words which expresses a complete thought. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, देखने वाले को साफ और मुकम्मल मानी फराहम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. आने वाले क्लासेस में तो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन भी हैं. आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 95% जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एटलीस्ट देयर मस्ट बी सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. फॉर एग्जांपल, she drives a car. This is a complete sentence. She drives a car. You have a new mobile. This sentence now gives complete information about the possession of someone, or he has done his homework. He has done his homework. So in these sentences हमने पढ़ा कि sentence कैसे कहते हैं? There should be a group of words and it must express or convey a clear meaning or complete thought कि ये साफ और मुकम्मल मानी फराहम करें. इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. इसके जो एंटोनिम है, मुतज़ाद है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. Phrase is also a group of words, but there is no subject, no verb. There is no subject-verb combination, and that is why it cannot convey a clear meaning. Phrase हमें clear meaning फराहम नहीं करता, इसलिए हम उसको sentence नहीं बोलते. Sentence कैसे कहते हैं? That it must convey a clear meaning. और क्लास में आपको बताऊं कि ये clear meaning क्यों provide करता है? Because there is subject verb combination. If there is no subject verb combination, अगर जुमले में subject verb combination ना हो तो फिर हमें ये क्लियर मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता. आने वाले क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट. सो यहां तक आप सिर्फ जहन में ये रखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. क्लास, नाउ वी आर गोइंग फर्दर टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स or the different functions of a sentence. Functions of a sentence.
Class, functions of a sentence. Simply, a sentence has two functions. It has two functions. The first, it shows an activity. And the second, it shows a state. We say state of being. State of being. The first function of the sentence is it shows an activity. Activity means there must be an action. And state means state of being. For example, she studies English. In this sentence, there is an action. Who studies English? She studies English. Study is an action verb. This is called action verb. So if there is an action verb, the whole sentence shows an activity. Clear? Again, unlike now, we are going towards the state. If I say she is a student, in this sentence there is no action. This sentence only relates the state of being. State of being. That who is she? She is a student. So there is no action. When there is no action, it means that this sentence, ये sentence हमें क्या जाहिर करता है? State को जाहिर करता है, किसी की हालत को जाहिर करता है. So these are the two major functions of a sentence. ये sentence के दो अहम function हैं कि it shows an activity, किसी एक्टिविटी, किसी सरगर्मी को जाहिर करते हैं, and shows a state, किसी हालत को. Let's suppose इंसान तो दो मूड में होता है, या तो रेस्ट मूड में होता है या फिर जो है एक्टिव मूड में होता है, इधर स्टैटिक और डायनामिक. तो क्लास जो डायनामिक मूड है, जो एक्टिव मूड है, ये इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी. जो रेस्ट मूड है उसको बोलते हैं स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, आई से ही इज प्लेइंग फुटबॉल. He is playing football. There is an activity, playing. यहाँ पे क्या है? एक्टिविटी है. Playing क्या है? एक्टिविटी है. And अगर मैं ये बोलूँ he is a player, तो ये क्या है? ये स्टेट है, because there is no activity. इस जुमले में कोई एक्टिविटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, they are teaching in a school. They are teaching in a school. तो यहां पे एक्टिविटी कौन सा है? टीचिंग है. पढ़ाने के अमल को क्या बोलते हैं? टीचिंग. एक्टिविटी है, एक्शन वर्ड है. अगर मैं ये बोलूं दे आर स्कूल टीचर्स, दे आर स्कूल टीचर्स, तो ये क्या हुआ? ये उनकी स्टेट है. हम उनकी एक्टिविटी को जाहिर नहीं करते बल्कि उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी व्हाट आर दी उनके जो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या है? वो क्या करते हैं? दे आर स्कूल टीचर्स. उनके हालत को हम बयान करते हैं. सो दीज टू आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस. अब मैं ज़रा आगे आपको सेंटेंस के दूसरे जो फंक्शन है, जो सब फंक्शन है, जो एक्टिविटी और स्टेट के अंदर आते हैं, मैं ज़रा आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप कोई से भी 10 सेंटेंसेस ऐसे लिख के जो एक्टिविटी, एक्शन को जाहिर करते हो, और 10 सेंटेंसेस ऐसे लिखे जो किसी हालत को जाहिर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. आई एम अ टीचर, ये मेरी स्टेट है. और मैं काम क्या करता हूँ? आई एम टीचिंग. शी इज माई मदर. शी इज कुकिंग. शी इज माई मदर स्टेट. शी इज कुकिंग, एक्टिविटी. क्लियर? माई ब्रदर इज अ शॉपकीपर. ही इज वर्किंग इन द शॉप. क्लियर क्लास? सो इस तरह आप 10 सेंटेंसेस लिख के स्टेट वाले और 10 सेंटेंसेस लिख के एक्टिविटी वाले. ओके क्लास, इसके अलावा सेंटेंस के कुछ और फंक्शन भी हैं जो आने वाले क्लासेस में हम इनको डिटेल से
के ऊपर बात करेंगे। इट शोज अ स्टेटमेंट, ये किसी स्टेटमेंट को भी जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज और ही कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह दूसरे, ये किसी इसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये किसी नेगेटिव निगेशन को भी जो नेगेटिव है किसी काम की निगेशन को भी जाहिर करते हैं। दे डू नॉट लिव हियर। ये क्वेश्चन को भी इंडिकेट करते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल? डू यू प्ले फुटबॉल? इसके अलावा ये किसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी जाहिर करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। इसके अलावा ये किसी एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को भी जाहिर करते हैं। वाव, इट्स टू ग्रेट। क्लास, तो दीज आर द अदर फंक्शंस ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि डिक्लेरेटिव, असर्टिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव जो नेगेटिव पोजीशन है सेंटेंसेस है, वो भी जो फंक्शन ऑफ सेंटेंस है उसको जाहिर करते हैं। इसके अलावा किसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को, नेगेटिव को, क्वेश्चंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को बयान करने के लिए, शो करने के लिए सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंटेंस। आने वाले क्लासेस में हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंस को किन चीज़ों से बनाते हैं। देयर इज सब्जेक्ट, देयर इज वर्ब, देयर इज ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट की हम टाइप्स पढ़ेंगे, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। द सेम वी विल बी टॉकिंग ऑन वर्ब, action verb, helping verb and linking verbs. And the same we will be talking on object, direct object, indirect object, object of the preposition and cognate object. So आपके सीखने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ आपको इस चैनल में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।